Well, student, as you have given information about the chapter Children at Work and why this is chapter very important and who gave their important association to write such an inspirational story. So, student, after getting a brief information about Geeta Wolf, Arijit Sen, Anushka Ravi Shankar, we will discuss what is mentioned and what theme is taken in this chapter. So let's start the chapter. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family to make livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. That means here, student, it is mentioned that why the student left their home and compelled to do work. वो घर क्यों छोड़ते हैं और उन्हें काम करने के लिए मजबूरी क्यों आती है? It is discussed in the chapter. So there are many reasons. Some who want to help their family for livelihood, some discomfort from home, and some who want to or satisfy their needs. कुछ बच्चे अपने परिवार के हेल्प के लिए, तो कुछ अपने डिस्कम्फर्ट के लिए, तो कुछ अपनी खुद की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए घर छोड़ के भाग जाते हैं. बट दिस इज नॉट गुड. दिस इज नॉट गुड. यू हैव टू फाइट विद सर्कमस्टेंसेस विथ योर फैमिली. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम से फाइट कीजिए. दिस इज नॉट अ राइट वे टू लीव द हाउस बिकॉज always the things not good give the good result. It make your life complete miserable. Okay. Velu, an 11 years old boy, run from home. Here we are going to discuss the story and which character is Velu, the central character of Velu, who is 11-year-old boy. He wanders around the hours before getting on a train to Chennai without a ticket. And he wanders on the platform and waiting for a train. And when the train arrived, he get the train without tickets and set out for Chennai. वो चेन्नई के लिए रवाना हो जाता है. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at a station shouts word of welcome. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger. He was tired and he doesn't know that where to go. Suddenly, a stranger shouted him and welcome at the station. So, student, let's discuss on the main chapter. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जैसे ही कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन पर आके रुकती है, पुल्ड इन, अराइव, आकर रुकती है. इट टुक हियर, पुल्ड इन, दैट मीन्स अराइव. पुल्ड इन, वेलू टेक सम टाइम टू गेट ऑफ. वेलू को कुछ समय लग जाता है उतरने में बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड. वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स वर ओबली. और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरता है उसके पैर जो होते हैं लड़खड़ाने लगते हैं. दैट मीन्स अनस्टीडी बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड. दैट्स वाई ही हैजंट फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स. As if he was still on a moving train, and he felt that he was still in a moving train. उसे लग रहा है कि अभी भी वो मूविंग ट्रेन में है. जैसे कि आप सब लोगों ने ट्रेन की यात्रा तो की ही होगी या बस की. कई बार लंबी जर्नी के बाद उतरने के बाद भी हमें लगता है कि नो अभी भी हम उस बस में ही ट्रेवल कर रहे हैं. Hey, out of way, a porter went by with a load trolley. तभी hey, out of way, तभी एक पोर्टर, एक कुली आवाज देता है कि हे, रास्ते से हट जाओ.
ही वॉज विथ अ लोडेड ट्रॉली, वो एक लोडेड ट्रॉली के साथ था। वो कहता है रास्ते से हट जाओ। वेलू जम्प्ड असाइड एंड व्हेन वेलू हियर्ड सडनली दिस वॉइस ही जस्ट जम्प्ड असाइड। वो एक कूद कर अलग हटता है, नहीं तो इट मे बी दैट ट्रॉली विल इंजर्ड हिम, नहीं तो हो सकता है कि ट्रॉली उसे इंजर्ड कर देगी। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down, and he saw a bench on the platform, and he went to the bench and sat on the bench, putting his bundle down. वो क्या करता है, जाता है एक बेंच पे बैठ जाता है और अपने बंडल को एक साइड में रखता है। In all his 11 years, he had never seen the many people except once in a year at the fair in a village. He also mentioned that never he saw the many people in his life what he is seeing on the platform, except once in his life he saw such a crowd in his village fair. आगे वो मेंशन करता है कि उसने लाइफ में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितना वो प्लेटफॉर्म पे देख रहा है। एक बार हाँ, वो गांव के मेले में एक बार गया था तो उसे इतनी भीड़ दिखाई दी थी। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद द सूटकेस एंड द पीपल वर हरी एंड वरी ऑन द प्लेटफॉर्म एंड दे वर बम्पिंग हिम विद द सूटकेस टू गो अहेड। लोग आगे जाने के लिए क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से निकल रहे थे, और जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा था, बम्पिंग मीन्स क्या होता है, बम्पिंग दैट मीन्स पुशिंग हिम, हर्टिंग हिम, उसे धक्का देना, उसे चोट पहुंचाना, या सूटकेस आपस में जो टकराते रहते हैं लोग एक दूसरे से कंधे को रगड़ते हुए चलते रहते हैं, उसको कहते हैं बम्पिंग। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर एंड ही वॉज हियरिंग सम साउंड विच वॉज अनाउंस्ड बाय द लाउड स्पीकर। जैसे रेलवे स्टेशन पे होते हैं ना कि ट्रेन के अनाउंसमेंट वगैरह होती रहती है, तो वैसे ही कुछ साउंड्स भी लाउड स्पीकर पर अनाउंस हो रहे थे। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन their luggage and he saw that some people who sat on their luggage, कुछ लोग अपने लगेज के पास बैठे हुए थे। looking at the TV hanging from a roof, और रूफ पर कोई एक टीवी जो हैंग की गई थी वो टीवी को देख रहे थे, जैसा कि प्लेटफॉर्म पे होता है। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, यू हैव सीन इट। द नॉइज वाज टेरिबल एंड द नॉइज वाज टेरिबल, दिस वाज अ वेरी टेरिबल नॉइज। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू पुट हिज head down his knees, he was very miserable condition and very exhausted, वो बहुत ही थका हुआ था, बहुत ही miserable condition में था। he had run away from his village 2 days ago, why? क्यों वो थका हुआ था, बहुत miserable condition में था? क्योंकि वो 2 दिन पहले ही अपना गांव छोड़ के भगा था। for 2 days he has eaten nothing but some peanuts and the piece of jaggeries, and 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। he didn't eat something from the 2 days except peanuts and a piece of jaggeries, वो कुछ मूंगफली और जैगरीज के अलावा 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। in his bundle he carried a shirt, towel and comb, and what luggage he had? He had a small bundles in which a shirt, towel and comb is contained, जिसमें क्या थे, एक शर्ट था, टॉवेल था और कम्ब था, जो कि उसके बंडल में रखी गई थी। दिस वॉज हिज पोजेशंस, यही उसका कुछ टोटल पोजेशन, दैट मीन्स उसकी पूरी संपत्ति कह सकते हो कि पूरा का पूरा उसका संपत्ति धन यही था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. वो पहले दिन पूरे कन्नूर में ही भटकता रहा, फिर उसने चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ी थी। Velu had no money for ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment, and Velu had not money to buy the ticket. And it was his good luck that TT didn't come or entered in the unreserved compartment to check the ticket, and he escaped himself. वेलू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बिना टिकट ही अनरिजर्व कंपार्टमेंट में चला गया, और उसका एक अच्छा लक था कि टीसी भी नहीं आया चेक करने के लिए। बट स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी, नेवर adopt this trick to you,
नेवर ट्राई टू अडॉप्ट दिस ट्रिक। कभी भी आप ट्रेन या बस में जाएं तो आप टिकट लें, टिकट के साथ चलिए, क्योंकि स्टोरी दिस इज क्रिएट फॉर फन नॉट फॉर द रियलिटी। क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, पनिश होंगे, यू हैव टू पे योर फाइन, आपको अपने चार्ज भी चुकाने होंगे। ओके, he had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसने डोर के पास सोने की कोशिश की, but some of the people who were playing cards near him and continuously they keep on sounding. ये लोग क्या कर रहे थे? लगातार आवाज कर रहे थे, जिसकी वजह से वेलू सो नहीं पाया था। Hey, what? New to town, he called a rough voice. Then suddenly he heard a voice. Hey, new to town, hey. That means इस नए शहर में क्या चल रहा है? एक रफ वॉइस ने एक इंक्वायरी करने वाली साउंड में पूछा। वेलू opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Velu opened his eyes and tried to gauge that person or that tried to search the voice, but he saw that a lot of people around him, but no one was gauging him. उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई वेलू पे ध्यान नहीं दे रहा था। Here, hey, then again the voice exclaimed. फिर वो आवाज फिर से exclaimed की, hey, here. He turned round. फिर वो मुड़ा। Behind him was a girl round his own age, and he saw that there was a girl around his age. एक लड़की थी जो लगभग उसी के उम्र की थी। Wearing a long बनियान that came down to her knees. वो एक बनियान पहनी हुई थी जो उसके knees घुटनों तक लंबी थी। Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. And his hair was stiff and brownish, and he has hung a huge sack on his shoulder. Sack here means you can say that satchel. Satchel means क्या होता है? एक छोटा सा झोला या कोई थैला जैसा जो कंधे पे रख लेते हैं और उसमें कुछ सामान रखते हैं। This is the sack. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them. And she was picking rags from the dirty or the garbage, and she was putting them into his sack. तो वो क्या कर रही थी? वो उन डर्टी प्लास्टिक कप्स वगैरह को वो उसमें रख रही थी, into her sack. Why she is calling me? Thought Velu. And Velu began to think that why she is calling me and why she is a girl wearing banyan. Why the girl wearing banyan? वो लगता है इन सब चीज़ों को सोचने। No need to stare stupidly. What's your name? Velu muted Velu, looking away. No need to stare stupidly. What's your name? Then girl said that there is no need to gaze me like this stupid eyes. What's your name? Velu muted his name, looking away. So, Mr. Velu. Then the girl further communicate him by calling him Mr. Velu. लड़की फिर आगे जब पता चल जाता है लड़की को उसका नाम क्या है, तो फिर आगे कहती है कि ओ मिस्टर वेलू, said the girl, looking at his bundle, run away from home. ओ बंडल को देखते हुए वो समझ जाती है कि ये अपने घर से भाग के आया है। Velu didn't answer. But Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what had happened. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. He don't want to share his problem with stranger girl. That why he had left his home, because he didn't want to beat once more day from his father's hand. क्योंकि वो नहीं चाहता था अपनी बातें उस लड़की को बताना, और वो ये भी नहीं चाहता था कि एक दिन और रुकता और अपने पापा के हाथों वो मार खाता। This is a ridiculous. This is not a humorous thing that a father beat unusually to his son or daughter. बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है कि बिना मतलब और बिना जरूरत का किसी बच्चे को मारा जाए।
His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend on its drink. क्योंकि उसके पापा अच्छे नहीं थे, वो क्या करते थे? What the Velu and Velu's sister earned the money, he snatched them. Snatch them मतलब ले लेना, छीन लेते थे और उसे अपने वाइन पे या ड्रिंक पे खर्च करते थे. तो such kinds of things is very ridiculous. ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. Don't think I don't know. This place is full of children like you. Don't think I don't know. The girls mentioned that I don't think I don't know. But this place is full of children like you. So what are you going to do here because become rich? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों से ये जगह भरी हुई है और what are you going to do here become rich? It is a irony. It is a irony. Student, he want to make a fun. She sat down next to him. Velu shift away slightly. फिर वो क्या करती है? वेलू के करीब बैठती है and after this Velu shift slightly. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl, and Velu do some action so that it is obvious that he was hungry and his stomach is pinching. So girls feel that he was hungry and asked that, hungry? You won't get food by sitting here glumly, making face. I can find some if you want. And he also advised that you can't get the food if you keep on sitting here like this grimly. So let's do something. She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. So she picked up her sack. वो अपना बैग उठाती है, फिर वो अपना वो जो सैचल होता है उसको लेती है, फिर आगे निकल पड़ती है. वेलू अभी बेंच पे बैठा रहता है. What should he do? वो क्या करे? Should he follow this girl? क्या वो इस गर्ल को फॉलो करे? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, and when he saw that, the girls disappeared in the crowd. So he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. So he decided in his mind that he should follow that girl, and where to go he hadn't any information about the city, about the town. So it is better to follow that girl, and decided these things. He followed that girl. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. And the girl who was walking forward, Cummins by Cummins, she didn't look back to see or inquire that where he was. वो लड़की आगे बढ़ती चली गई और ये फिर वहाँ से उसके पीछे निकल पड़ता है. This was the first part of this chapter, and I hope so that you have got it the complete sense. Student, if you have any doubt, you can call me, you can give a message. Thank you.